মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভারতে খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তা হুমকির মুখে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাপদাহ এবং জল সংকটের কারণে কৃষিকাজ দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। তবে শহরের কিছু বাসিন্দারা ভিন্ন ধরনের এক সমাধান নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই কৃষি পদ্ধতিতে মাটি বা কৃষি জমির প্রয়োজনই পড়ছে না, বরং স্বল্প জলের ব্যবহারে কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যেই চাষ করা যাচ্ছে ফসলের। ভারতের শহরগুলোতে কৃষির ভবিষ্যৎ কি তাহলে এটাই হতে চলেছে? 1 কিলো টমেটোর দাম এখন 10 টাকা, অথচ কয়েক মাস আগেও ছিল 200 টাকা। কারণ চাহিদার তুলনায় তখন যোগান কম ছিল। কিন্তু এর জন্য শুধু বাজার নয়, দায়ী মানুষের কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন। ভারত জুড়ে কৃষকেরা জলকষ্ট ও খামখেয়ালি আবহাওয়ার কারণে ভুগছেন, কিন্তু ফসল চাষের নানা উপায় এখন রয়েছে। যেমন হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে মাটি ছাড়াই চাষ করেন আধার্স। நான் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டா இருந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஃபுல் டைம் அர்பன் ஃபார்மரா மாறி இருக்கேன். এখন আমি পুরো நம்ம யூசுவலா சாயில்ல தான் வந்து செடி வளர்க்கறத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். আমরা জানি গাছ মাটিতে হয়, தண்ணியிலயும் செடி வளர்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் கான்செப்ட். சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபோனிக்லயே NFT டெக்னிக்னு சொல்லுவோம், நியூட்ரியன்ட் ஃபிலிம் டெக்னிக். இது வந்து சாயில்லெஸ்ஸா நம்ம வளர்க்கறோம். இந்த மாதிரி NFT சேனல்ஸ்ல இந்த மாதிரி நெட் கப்ஸ்ல NFT பிரणालीতে আমরা கோகோபீட் தான் வளர்க்கறோம். இது சாயில் கிடையாது. சோ இதுலயே வந்து ரூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெனட்ரேட் ஆகி கீழ வந்து சேனல்ல வாட்டர் ஃப்ளோ எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். சோ அந்த வாட்டர்லயே நமக்கு செடிக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா ஈஸியா நியூட்ரியன்ட்ஸ் அதுக்கு போய் சேருது. and balance இருக்கிற நியூட்ரியன்ட் வாட்டர் அப்படியே திருப்பி சேனல் ஆகி பேக் டு டேங்க் போகுது. சோ இதனால நம்ம எங்கயுமே வாட்டர் வேஸ்டேஜே பண்றது கிடையாது। হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতি কিন্তু বেশ পুরনো। খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতাব্দীতে বেবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের প্রমাণ আমরা পেয়েছি। মনে করা হয় সেই সবুজ উদ্যানে কপিকলের মাধ্যমে নদীর জল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সময়ের সাথে সাথে হাইড্রোপনিক্সের মাধ্যমে জলে ডোবা খেতে এশিয়াতে ধান চাষ হয়েছে। মার্কো পোলো এই পদ্ধতির কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। প্রথাগত চাষের তুলনায় এই পদ্ধতি দক্ষ, কারণ তা 90% অবধি জল বাঁচাতে পারে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের কারণে বাষ্পীভবনে জল নষ্ট হয় না এবং ভৌমজল শেষ হয় না বললেই চলে। আরেকটি সুবিধা হলো গ্রীষ্মের তাপ বা আর্দ্রতা থেকে ফসল রক্ষা পায়। বাণিজ্যিক খামারগুলো এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিদিন 50 কেজি সবুজ সবজি ফলায়, যার দাম অবশ্য সবার নাগালে আসেনি এখনো। বড় অঙ্কের বিনিয়োগ এবং এই সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকা হাইড্রোপনিক্সের অন্যতম বড় বাধা। এখনও তা ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাড়িতে ছাদ আছে শহরের এমন বাসিন্দাদের কাছে বরং তা আকর্ষণীয়। এমনই একজন ডি সুরেশ, যিনি তার সবজির চাহিদার 40%ই নিজের ছাদে ফলান। ডি সুরেশকে তার ছাদে হাইড্রোপনিক্স খামার তৈরিতে সাহায্য করছেন আধার্স। এটি বসাতে প্রায় 20,000 টাকা খরচ হয়েছে তার। Future is going to be hydroponics. Future is going to be terraces, which are all non-productive assets. So if we can convert that, we can produce lots. এরকম হলে টমেটোর দাম আর 200 টাকা হবে না। চান্সে গেছে। যাদের হাতে পুঁজি আছে তারা এতে বড় আকারে বিনিয়োগ করছে। চেন্নাইয়ের এই পিৎজা রেস্তোরাঁ যেমন তাদের ব্যবহারের সবজির 50%ই নিজেরাই ফলায়। சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேப்சிகம், ஹாலபினோஸ் மொத்த சப்ஜி. சோ இதெல்லாம் வந்து பீஸாஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் which is very expensive. வெளிய வாங்குற மார்க்கெட் ரேட்டை விட நம்ம கம்மியா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம்। சோ அதுதான் இதோட மெயின் অ্যাডভান্টেজும் கூட। বাজারের উপর নির্ভরতা ও জলবায়ু সমস্যা রাজ্যের অন্যত্র রয়েছে, কিন্তু এরকম সমাধান সহজলভ্য হলে তা বিশেষ করে শহরের ক্ষেত্রে ফারাক গড়ে দেবে।